So perturbation is one of the very fundamental technique, and this is just derived from the Taylor expansion. And if you are just going to use Taylor expansion, then you can approximately get the energy eigenvalue of any system which will be perturbed from the original system. So let us first discuss what is original system, what is perturbed system, and how it will work. And theory is very simple but very logical. So we will also go for a basic derivation also, and then we will try to go for different types of problems. So I think today we have two classes. So first we will go for derivation and try to understand basic notation, and after then we will go for different type of problems. Okay, so we have a Hamiltonian, and this Hamiltonian can be separated by two Hamiltonian H0 plus HP, where H0 is the original Hamiltonian and unperturbed Hamiltonian, original Hamiltonian or unperturbed Hamiltonian, and this HP is lambda W, and where lambda is very small. Lambda is very small. So what is meaning of original Hamiltonian or unperturbed Hamiltonian? Meaning of original Hamiltonian or unperturbed Hamiltonian is that we know the energy eigenvalue and energy eigen function of this particular Hamiltonian. So we have H0, and I can write En0 due to just notation, due to just clarity of the notation. So this is H0 phi n, En0 phi n. So these are the well solved, well defined Hamiltonian. You can solve it in a very nice manner by using the Schrodinger wave equation, time dependent Schrodinger wave equation, and you can easily get what is your En0 and what is your phi n. And what we are doing, we are adding some extra potential or extra energy to system such that we are getting a new Hamiltonian H. So ideally what we have to do, ideally we have to solve H psi, and I can write H psi n is equal to En psi n. Ideally we want to this complete solution. So this is ideal case, and in this case we can easily solve this particular equation. But due to mathematical compulsion, it is very difficult to solve this particular Hamiltonian completely due to this particular extra fact. Now, what we want to do? Now we want to just try to approximate this solution. If I am talking about solution, I am talking about wave function as well as energy eigenvalue for the nth state up to some order. If I am talking about up to some order, means I am talking about lambda to the power 1 or lambda to the power 2, and we just want to calculate up to some level of precision. So this is idea behind that. We cannot solve it completely. Why we cannot solve it completely? Just due to mathematical toughness or mathematical what you can say, very tough mathematics and very messy mathematics. Okay, just you can have. But thing is that it will work only if lambda is very, very small. That means this perturbed term is very small. Now, what is meaning of very small? If I will ask you that this number should be very small, that means you have to ask me, sir, what should be the maximum value of this particular lambda? Isn't it? That we can check. Is that logical question? ये logical question हो सकता है ना? If I am saying you have to take lambda very, very small, that means same time you can ask in a reverse question, so what should be the maximum limit? I can go for lowest to lowest value, but I have to go up to some maximum limit. So what is the criteria of this maximum limit is very, very important. So let me give you one particular example.
and then we will try to understand what should be this particular lambda and how we can manipulate this particular lambda. So we have a spring mass system that is harmonic oscillator, isn't it? We have a spring mass system, and this is my harmonic oscillator. This is mass m. I can have angular frequency omega, which is root under k upon m. We know all this fact. And what we are doing, we are just putting some charge on this mass, and we are putting this thing in a electric field, and that electric field is constant electric field. So suppose this kind of situation is there, then what is Hamiltonian? My Hamiltonian is basically px square upon 2m plus half m omega square x square, and if I can take this charge is positive, then this is minus q e x. So this is my Hamiltonian. This is potential energy due to this particular electric field, and this is E naught, and we can take minus Q E naught x. And here this Q naught x is actually lambda. This Q naught x is actually lambda. Now, so question is that what should be this particular value of lambda such that we can use this particular non-degenerate perturbation theory? Are you getting it in a very nice way? सर लैम्बडा क्यू ई नॉट एक्स है कि क्यू ई नॉट होगा है Q E naught x is variable. Okay, Q E naught x is variable. So we are just talking about the parameter. Lambda is some parameter. Are you getting my point? Yes, sir. Okay, and we are just talking about this particular lambda parameter. Now, what will happen if I will just give a very small value of electric field? Then what will happen? The mean position will shift. Lambda will be small. That's very trivial. Lambda will be small, but I am talking about what will happen to the system. Okay. Yes, sir. So obviously, so what will happen? This particle will shift their mean position, and it will oscillate like this. Okay. Currently, its mean position is 0. It will shift its mean position, and it will oscillate like this. Okay. And again, we will increase the electric field. Then obviously amplitude will be increased. Yes. Maybe if I will increase electric field so high such that it will overcome this particular spring force, then what will happen? Suppose we are talking about ideal system and we will just try to increase my electric field such that it will overcome this particular spring force. You have always restoring force. Suppose this Q E naught x is very, very greater than, or Q E naught is very, very greater than minus kx, then what will happen? This particle will just go into one particular direction. Hai na? Yes, sir. So obviously the effect of restoring force will negligible, and it will just behave such that the particle is moving in a constant field. Then your system is going to change. It will never remain harmonic oscillator. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, It sir. will never remain harmonic oscillator. So now I can claim my electric field. If I am talking about my electric field, that means Q into E naught. This value should be some numerical value that will preserve the harmonic nature of or oscillatory nature of a system. Then only we can use this perturbation theory. Are you getting my point? That means the original essence of a system, the original nature of a system should not be changed. Everybody is comfortable? Yes, sir. Yes, है sir. ना? ओरिजिनल एसेंस जो है सिस्टम का वो चेंज नहीं हो, उसकी जो आत्मा है वो चेंज नहीं हो रही है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. इनर कॉन्सेप्ट उसकी वैसे ही रह रही है. वो हार्मोनिक ऑसिलेटर it may be possible that its mean position is there, it can be changes, maybe it may possible its angular frequency may be also changes, but in this case angular frequency is not also going to change. We have solved this question into harmonic oscillator problem. You can just go and check, है ना?
आप चेक करोगे माइनस लैम्डा एक्स या प्लस लैम्डा एक्स के लिए हमने सॉल्व किया है. सो वी कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड up to that point such that this is oscillating, the whole system is oscillating and original motion is preserved. Now what is mathematical meaning? Qualitatively तो समझ लिए, philosophically भी समझ लिए. What is mathematically what you have to do? If I am talking about harmonic oscillator, मैथमेटिकली और क्वांटम मैकेनिकली आपके दिमाग में क्या आता है? जस्ट गिव मी आंसर. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हार्मोनिक ऑसिलेटर, आप क्या सोचते हो उसके बारे में मैथमेटिकली? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकली, दिस इज ट्रू एंड फ्रो मोशन, restoring force is there, it's okay, everything is correct, but quantum mechanically what do you think? Quantized energy. Oh, that is quantized energy for every bounded system. Yes, yes, yes. Angular frequency. Mathematically means the solution can be written in a basis of Hermite polynomial. Yes, sir. Isn't it? Yes, sir. If I am talking about harmonic oscillator, that means the solution can be written in a basis of Hermite polynomial. That's it. As well as Gaussian into Hermite polynomial. That means if we are able to write the solution in a basis of or in a superposition of or as a function of this kit, then obviously we are in a region where my system is just behaving like Hermite polynomial. Okay, so my system just behaving like a harmonic oscillator. Are you getting my point? Yes, sir. है ना? So पूरा आइडिया क्या है? आइडिया फिर ये है, we are not able to solve this thing completely. It is very difficult to solve. So we will try to approximate the solution, and we will try to approximate the solution with the mathematical tool of Taylor expansion. Because this lambda is very small, so we can easily use Taylor expansion, and hence we can easily use Taylor expansion. Then my all solution or all the term related to Taylor expansion can be explained with the eigenstate and eigenvalue of the unperturbed Hamiltonian, isn't it? Yes, sir. Are you getting my point? सर In- लास्ट वाला वो जरा बता. मैं फिर से कह रहा हूं, you have unperturbed Hamiltonian, it is completely solved. So here what is your harmonic oscillator? That is unperturbed Hamiltonian, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. So this is your unperturbed Hamiltonian, this is your H naught, and you know the solution H naught n kit is equal to n plus half n kit, and H cut omega is also there, H cut omega n kit. You know this solution. Are you getting my point? Yes. sir. And then I add it, I disturb my harmonic oscillator slightly. I disturb my harmonic oscillator slightly. That means my complete solution for this Hamiltonian can be also written as a function of n kit. Are you getting my point? The complete sir. solution, this complete solution at this complete solution psi n and en can be written with the knowledge of original Hamiltonian or unperturbed Hamiltonian. यहां पर हमें पता क्या है? आपको क्या पता है? What is known thing? That is original Hamiltonian, its eigenvalue and eigenfunction. These are known thing to you. आपको क्या नहीं पता है? आपको नहीं पता है, psi n नहीं पता है, en नहीं पता है. So what you have to do? You have to write your psi n and en as a function of original Hamiltonian and original eigenvalue. Are you able to understand? Yes, Yes. sir. Sir. है ना? What is a known thing? Complete solution. What is known thing? Unperturbed Hamiltonian and its eigenvalue and eigenvector.
So let us go for a derivation part, and this derivation is really awesome derivation. Okay, so यहाँ तक कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, otherwise I will directly go for derivation. सर सर पर्टर्बेशन हमेशा एक्सटर्नल फील्ड्स के द्वारा ही होता है क्या? मतलब मैं समझा नहीं, जैसे सर जैसे ये आदमी हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहा है, तो हम लोगों ने एक्सटर्नल फील्ड लगाया, उसकी वजह से पर्टर्बेशन हो गया। इंटरनल फील्ड का मतलब मुझे नहीं समझ में आता है, क्या होता है इंटरनल फील्ड, क्या होता है? इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल फील्ड, मतलब जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हम लोगों ने। तो तुम इसके अलावा क्या लगाना चाहते हो, ये तो बताओ। तो सर लगाना कुछ नहीं चाहता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पर्टर्बेशन हमेशा मतलब किसी भी केस में एक्सटर्नल फील्ड्स की वजह से एक्सटर्नल होता के है। अलावा क्या है ये तो बताओ, तब तो मैं बात करूंगा। तो मतलब इंटरनल इंटरनल, यस। अब बताओ इंटरनल का मतलब तुम क्या समझ रहे हो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरनल? मैथमेटिकली जरा एक्सप्लेन तो करो इंटरनल क्या है। इंटरनल जैसे एटम में बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, उसके कारण भी मतलब आई एम जस्ट आस्किंग, मतलब सर नहीं आस्किंग का बात थोड़ी है, मजाक थोड़ी चल रहा है। इंटरनल को पहले तुम एक्सप्लेन करो। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आई एम नॉट ह्यूमिलेटिंग यू, बट व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरनल एंड हु विल डिसाइड व्हाट इज एक्सटर्नल एंड व्हाट इज इंटरनल? इसका आंसर दो। जैसे सिस्टम अगर सराउंडिंग फोर्स लगा रही है सिस्टम पे, तो तो वो सराउंडिंग फोर्स लगा सकती है, तो वो इसको इंटरनल कहेंगे एक्सटर्नल कहेंगे, ये तो आपके ऊपर एक्सटर्नल, डिपेंडेंट है। तो मतलब जैसे इंटरनल मतलब अ, अंदर के अंदर, अरे forces। यारो तो तुम अंग्रेजी हिंदी में बता रहे हो, कोई एक एग्जाम्पल तो दो मुझे कि सर मैं इस, हाँ हाँ बताओ। जैसे एटम में न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, तो उसको एक्सटर्नल कहेंगे इंटरनल कहेंगे, कौन डिसाइड करेगा? तो ये तो हम लोग डिसाइड करेंगे। भाई अब सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन एटम तुम्हें पता है, यस एग्रीड? अब हाइड्रोजन एटम में तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को लेकर के सॉल्व कर लिया है, एग्रीड? यस सर, ठीक है, ये तुम्हारा ओरिजिनल हैमिल्टोनियन हो गया, यस सर, एग्रीड? अब इसके अलावा तुम्हारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बट तुम इसे फ्रेम नहीं कर पा रहे हो। लिसन, यस टेक सर, एग्जांपल ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है? यस सॉरी, सर, टेक एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का ओरिजिनल जो हैमिल्टोनियन है, जिसका सॉल्यूशन तुम्हें पता है, वो सॉल्यूशन के लिए पोटेंशियल क्या है? -e²/4πε0r। यस, यस सर, ये तुम्हें पता है। अब इसके अलावा और भी फोर्सेज उस पर लग सकते हैं, यस सर, लग सकते हैं। तो सपोज करो एक फोर्स लग रहा है, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में क्या करेगा? प्रोटॉन मूव करेगा, रोटेट करेगा, यस? यस सर, तो अगर प्रोटॉन रोटेट करेगा तो रोटेटिंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड देगा, यस सर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन का स्पिन आपस में कपल कर सकते हैं। यस सर, तो अब ओरिजिनल हैमिल्टोनियन के लिए ये जो कपलिंग टर्म है, ये इंटरनल होगा एक्सटर्नल? दैट इज एक्सटर्नल। दिस विल बी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल नहीं होगा ना? यस सर, अब एक्सटर्नल। सपोज करो तुम्हें उसका भी सॉल्यूशन, सपोज करो तुम कंप्लीट सॉल्यूशन जानते हो, कपलिंग का भी तुम सॉल्यूशन जानते हो, ओके? यस सर, और अब तुम उसे ओरिजिनल हैमिल्टोनियन कर रहे हो, ठीक है? तो अब जो न्यूक्लियस जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, दैट विल बी इंटरनल और एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। ये डिपेंड करता है कि आप किसे ओरिजिनल हैमिल्टोनियन कहते हो और किसे परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन कहते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, हो सकता है कि कोई पर्सन इसे ही ओरिजिनल हैमिल्टोनियन कहे और इस पूरे के पूरे को परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन कहे, और उसका ये कहना हो कि माय पार्टिकल इज जस्ट अ फ्री पार्टिकल, और उसके ऊपर ये सारा एक्सटर्नल फोर्सेस है, इजंट इट? यस सर, So what is your original Hamiltonian? That will decide what is your perturbed term. एंड perturbed term तो एक्स्ट्रा टर्म ही होगा ना, जिसके ओरिजिनल हैमिल्टोनियन के अलावा वाली टर्म है, यस सर, ठीक है? यस सर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टोटली गॉट। चलो, सर यस। यस सर, ये अभी आपने बताया था ना कि लैम्डा का मैक्सिमम लिमिट
होना है। हम्म, जैसे लैम्बडा वेरी मच लेस देन 1, उसका मिनिमम भी लिमिट कुछ तो नहीं है मिनिमम ना? क्या है लीज, आप तो छोटा से जितना छोटा करते जाओ, है ना ओके। भाई, वो तो और अच्छा है ना ठीक भाई, है। सिंपल सी बात है। जस्ट अ मिनट, आपने कार्ड को, आप कार्ड से खेलते हो, उसको डिफरेंट टाइप से बना करके रखते हो, ठीक है। हाँ। अब आप कार्ड का जो आपने शेप बनाया है उसको वैसे ही रहने देना चाह रहे हो, बस थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हो। तो क्या करोगे, धीरे से किसी एक चीज को हटा दोगे, लगभग शेप वही रहेगा। तो अब तो यस। धीरे से हटाने का कोई लिमिट थोड़ी है। यस है नो, है ना। ओके। आपको ऐसा करना है कि वो पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाए। यस, ओके सर। ओके। So you have to just keep this field in such a way the nature of original Hamiltonian will preserve. समझ रहे हो? तो उसके लिए तो निगेटिव, उसके लिए तो मिनिमम की ही लगानी पड़ेगी ना, मैक्सिमम में तो सभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो मिनिमम लिमिट का कोई मतलब नहीं है। चलो, सो लेट्स गो फॉर अ डेरिवेशन पार्ट। ओके, गुड। सो we can have h psi n is equal to En psi n, and this is non-solution. H naught phi n is equal to En0 phi n. H naught phi n is equal to En0 phi n. So this is a complete, this is basically your solution, original Hamiltonian or unperturbed Hamiltonian, and H is nothing but H naught plus lambda W, and this lambda W is perturbed Hamiltonian, that is HP. What we can choose? We can choose a solution psi n is equal to phi n plus lambda psi n1 plus lambda square psi n2 and so on. Similarly, we can choose En is equal to En0 plus lambda En1 plus lambda square En2 and so on. Clear है ये? En is equal to En0 plus lambda En1 plus lambda square En2 and so on. So obviously you can check if lambda is equal to 0, psi n is equal to phi n, and En is equal to En naught. Means your complete Hamiltonian is actually equal to what? Equal to what? Unperturbed Hamiltonian. Yes. So we can write my wave function in such a way and my energy eigenvalue in such a way, and we are writing it in a power series of lambda, such as just like we are using the Taylor expansion. Okay. Now our main target is that how we will calculate En1, En2 and psi n1. So how we will calculate? If these are the solution, it should satisfy this particular equation. Satisfy करना चाहिए. Yes, sir. So what will happen? H phi n plus lambda psi n1 plus lambda square psi n2 must be equal to En0 plus lambda En1 plus lambda square En2, and we have basically pi n plus lambda psi n1 plus lambda square psi n2 and so on. And here we will write H is equal to H plus lambda W, and you can write this particular thing. Yes, H naught plus lambda W.
लिख सकते हैं हम. So now what we will do, we will just equate the coefficient of lambda on both side. दोनों तरफ हम क्या करेंगे, lambda के coefficient को equate करेंगे. Everyone is comfortable? Yes. So let's Yes, try sir. to equate Sir. the coefficient Sir. of lambda on both side. Yes. सर साइन 1 एंड साइन 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन है या क्या sorry, साइन वन क्या, अभी तो जस्ट एक मैं एक नोटेशन दे रहा हूं, जस्ट यूज दिस नोटेशन. क्या है वो बताएंगे. इंटीग्रेशन कहां से आ गया तुम्हारे पास, सॉरी डेरिवेटिव डेरिवेटिव कहां से आ गया. मैं डेरिवेटिव ही होगा, बट किसका डेरिवेटिव होगा वो नहीं पता है. ओके. ओके जस्ट मैंने भाई टेलर सीरीज में क्या होता है, पावर सीरीज ही तो होता है ना. और उसके कोफिशिएंट क्या होते हैं, दैट विल कम टू द ऑब्वियसली डेरिवेटिव पार्ट, है ना. बट हम लोग यहाँ पर जस्ट इक्वेट करके टेलर एक्सपेंशन से चीजों को देखने की कोशिश करेंगे. ओके. सो फर्स्ट वी आर जस्ट गोइंग टू lambda to the power 0. So on the left hand side, what will be this particular value? H naught phi n is equal to ये दोनों आएगा and en phi n, en0 phi n. So that value is obviously trivial, en0 phi n. Are you people comfortable? यस सर Next we will Sir. go for lambda to the power 1. So lambda to the power 1, this lambda w with the phi 1 and h naught with the psi n1, isn't it? On the left hand side. Yes, sir. यस सर So for here, we can go for h naught psi n1 plus lambda w phi n. And on the right hand side, what do you have? You have en0 with psi n1 and en1 with phi n. Yes? Yes, sir. So you have en0 psi n1 plus en1 with phi n. en1 with phi n. Now we will go for what? Lambda square. Yes? What will happen? H naught will go to this one. H naught psi n2. First will go to lambda w will go to this one. So you have plus w psi n1 is equal to, in this side, what you have? En will go to psi n2. En0 will go to psi n2 plus en1 will go to psi n1 plus en2 will go to phi n. Okay, great. So similarly, you can go for next level or next higher level, but we have to just go up to this particular point. इसी point तक जाना है. Now, here is a very important point, and whatever we have discussed in the last 10 minutes, we will just try to write it mathematically. Are you getting my point? We will just try to write it mathematically. What is that particular thing? What I am saying that my lambda should be very small. It should be very small such that my psi n can be, or my system will just behave like a original Hamiltonian, isn't it? Yes, sir. है ना? That means, can I claim psi n is more or less equal to phi n? तभी तो ओरिजिनल रहेगा. Yes? Yes, sir. Means they are more or less parallel. Now, from here, can I also claim that this phi n and psi n will be more or less equal to 1? But Yes, sir. don't confuse
with this thing. If it is true, you cannot give guarantee that this is also true. What do we want? We want such this type of solution. Are you getting my point? Yes, sir. ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि my new state can be approximately equal to my original state. But what will be happen to the orthogonal one? Nothing to do with this new one. Okay? Yes, sir. उसका इससे कुछ लेना देना नहीं. I am not claiming that these two are orthogonal in nature. So if we are taking these two things together, then let us see what will happen. Phi n plus lambda phi n psi n1 plus lambda square phi n psi n2, and you will get higher order term that must be equal to 1, more or less equal to 1. And this equal to 1, isn't it? Yes, sir. This is normalized, so this equal to 1. So what will happen? This and this term is going to cancel out, and we can again equate the coefficient on both sides. So what is phi? What is the relation? The phi n and psi n1 must be equal to 0. Phi n and psi n2 must be equal to 0, and similarly all other term. And please don't confuse with the concept of orthogonality and all this thing. This is due to fact that this thing is mathematically equal to 0. It is just looking like orthogonality, but it is not a orthonormal kind of situation. Okay, this is just a mathematical fact. Are you getting my point? Yes, sir. ये चीज क्लियर हुआ आपका क्या? Yes, sir. है ना? Okay. So now if you are happy with this argument, Sir, sir, yes. ये जरूरी नहीं है ना कि जीरो ही हो सर, मतलब कि वैसे टोटल सम जीरो होगा, समझा नहीं? टोटल सम 0 है? मतलब जो बचा हुआ सर वो जीरो होगा ना सर? सारे 0 होंगे, सारे, every term. ओके, हाँ सर, ठीक 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 सर, Phi n psi n3 will be equal to 0. So this हाँ, will, समझ so गए सर, we have पॉलीनॉमियल, हाँ, आप lambda की कोफिशिएंट दोनों तरफ इक्वेट कर रहे हो, ठीक है? थैंक यू। नाउ, और ये क्या है? ये यही चीज है जो मैं बार बार कह रहा हूं कि माई आफ्टर द परटर्बेशन माई सिस्टम मस्ट बिहेव सेम ओरिजिनल सिस्टम, सेम अनपर्टर्ब्ड सिस्टम. थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंज हो सकता है, बट दे आर मोर और लेस सेम थिंग. Yes, let's try to go for this. So let's go for obviously this is very trivial, so I am not interested into this one. You know that this is the complete solution. We know this solution mathematically. We have to go for this particular solution. So let's try to go for this. So what we will do, we will write phi n on both sides. दोनों तरफ phi n लिखते हैं. Then what will happen? Phi n h naught in this first term, lambda to the power 1, psi n1 plus lambda phi n, sorry lambda नहीं रहेगा, lambda नहीं रहेगा, हम तो lambda का पावर ही इक्वेट कर रहे हैं ना. So phi n w phi n, and this value is en0 phi n psi n1. प्लीज यहां से lambda हटा दीजिएगा, है ना? पहले जो lambda लिखा हुआ था प्लीज उसे रिमूव कर दो. And then we have en1 phi n phi n. Now obviously we know relationship between h naught and phi n. So obviously this is Hermitian. If it will operate on bra, it will give you same number or same value, isn't it? Yes, sir. Hermitian operator का तो यही मतलब है ना? Yes या no? Yes, sir. Yes. So
So obviously H naught will operate on this one. You will get En phi n psi n1 plus what is this particular term? ये क्या है? Phi n W phi n. सर ये perturb term का average That is average value of perturbed term on the eigenstate phi n. So this is known to you or unknown to you? known to us. Known to you. You have to only calculate this value. And this value is there. So En0. And this value is phi n psi n1 plus what is this value? 1. 1. You can write phi n. What is this value? 0. Yes? हमने अभी logically prove किया that this value is 0. Yes, sir. So first term is 0. Second term is known to us. We have to calculate, and this is nothing but the average value of phi n. Sorry, average value of W. Again, this term is 0. So you can write En1 and phi n is 1. So yes, you can calculate En1. Isn't it? Calculate हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. और देखो En1 किसके टर्म में कैलकुलेट है जो नॉन है आपको? Isn't it? Yes, sir. So look at this particular trick. This works. So if you will get the average value of W, which is perturbed Hamiltonian, then obviously you can get the correction term. We will just name all this thing, but first let's go for our next calculation. Everyone is comfortable up to this? Yes, sir. Okay. सर Hmm. ये ऑर्थोगोनलिटी सॉरी phi n and psi n1 ऑर्थोगोनल क्यों नहीं है? मतलब क्यों नहीं बोल रहे हैं हम? क्योंकि ऑर्थोगोनल नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है. ये हमने एज्यूम किया. नहीं, एज्यूम नहीं किया, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऑर्थोगोनल है. जब आप phi n के बारे में बात कर रहे हो तो psi m के बारे में इसके साथ क्या रिलेशनशिप है उसका कोई भी हमारे पास मैथमेटिकल रीजन नहीं है. हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमारा जो न्यू सिस्टम है वो ओरिजिनल सिस्टम को प्रिजर्व करे. सो न्यू सिस्टम का nth स्टेट ओरिजिनल सिस्टम के nth स्टेट को प्रिजर्व करे. अब nth स्टेट जो न्यू nth स्टेट है और mth स्टेट ओल्ड ओरिजिनल स्टेट है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है? वी डोंट नो. ओके सर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. No, so this is not an orthogonal relation. This is just a thing that my lambda is so soft, so simple, and so weak that my system is not disturbing heavily. वो destroy नहीं हो रहा है, वो वही system रह रहा है. Harmonic oscillator will remain harmonic oscillator. But yes, little bit is going to change. Are you getting my point? Yes, sir. Okay. So, what is our next target? So, next target we want to calculate psi n1. So, obviously, this will make a orthonormal basis phi m because this is Hamiltonian. ये क्या है? किसका है ये? Hamiltonian का eigenstate है phi m, है ना? Yes, sir. So it will satisfy complete relationship. So this will be psi n1. लिख सकते हैं ना इसे? Yes. Yes, sir. है ना? Yes, sir. But here we are just taking m is not equal to n. Are you comfortable? Because if m is equal to n, then this value is 0. Yes? Yes, sir. है ना? So we have to take m is not equal to n. So now again we have this term and let's try to go for phi m h naught psi n1 plus phi m w phi m is equal to en0 phi m psi n1
plus En1 pi m pi n. Now H naught will operate on this one. What you will get? EM EM0, isn't it? Yes, sir. So this value is EM0, and you will get phi m psi n1. Actually, we want to calculate what is this value, isn't it? If we are able to calculate this value, this is known to us, we can write the eigenstate of this one, isn't it? Yes, sir. And then this is, sorry, Wn na, यहाँ पर n होगा. Just correct it. MWN. What is this particular term? ये क्या है? Phi m W phi n. What is this particular term? WMN. WMN, that is matrix element, isn't it? Yes, sir. So that is matrix element in M and N. So that is M W phi n must be equal to En0 phi m psi n1, and this value is equal to what? 0. ये value क्या हो जाएगा? 0. Great. So what I can do, I can take this into this side and I will get phi m psi n1. मिल जाएगा ना? Yes, sir. So finally we are just going to solve the problem. So what you are getting? Phi m psi n1, and I can take En0 minus Em0 because it will take into this side, and this value is equal to phi m W phi n, and value pi m psi n1 is equal to pi m W pi n by En0 minus Em0. And now from here we can write the value of psi n1, and this value is pi m W pi n. This is just a number. En0 minus Em0. M is not equal to n, and this value is phi m. So you can now look at here. Is that W is known to you? Yes. Phi m is known to you? Yes. Phi n is known to you? Yes. En0 is known to you? Yes. Em0 known to you? Yes. Everything is known to you. This is unknown, and we get this particular thing. Yes. Yes, sir. And finally, I am not going to derive this thing. You can just derive it on the basis of this. So this is given into your study material. So I am just giving you the final answer. So we have basically En2, exactly same expression, don't worry. M is not equal to n, but here we have phi m W phi n mod square, and here you will have En0 minus En1, and we have En1 is equal to phi n W phi n. So yes, up to master's level, you have only this thing to do, है ना? सर EM होगा ना सर? हाँ? EN1 ही होगा सर, EM होगा ना? EM1, हाँ, sorry, EM0. This will be EM0. यहाँ पर जो सेम है वही होगा, है ना? Yes, sir. So this is your formula. एग्जाम में आपको बस ये 3 फॉर्मूला यूज करना है, और इस 3 फॉर्मूले का कैसे कैलकुलेशन करोगे उसे जानना होगा. नाउ व्हाट इज दिस En1? En1 इज फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन. फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन or energy correction up to order of lambda. Okay,
So this can be also written as energy correction up to order of lambda. What will be this thing? और किस स्टेट की बात कर रहे हैं? nth स्टेट की. फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इन nth स्टेट. nth state. Okay. So what will be this thing? First order wave function correction. First order wave function correction in nth state, or wave function correction up to order of lambda, because this is coefficient of lambda to the power 1 in a wave function, isn't it? So similarly, what will be this particular thing? Puneet, क्या होगा ये? Sir, second order energy connection. Very good. In which state? Nth state. Second order energy correction in nth state. अब सपोज करो कई बार ऐसा दे देता है आपको प्रॉब्लम कि भाई लैम्डा टू द पावर 4 का निकालो, लैम्डा टू द पावर 6 का निकालो, तो कैसे करोगे? बाय द वे अगर ऐसा दे दिया तो पावर बढ़ाते जाएं सर. पावर बढ़ा देन ऑब्वियसली यू हैव अनदर फॉर्मूला आल्सो, बट आप वहां पर देखोगे कि आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व द कंप्लीट सॉल्यूशन. बट इसका कोई मतलब नहीं है, जब कंप्लीट सॉल्यूशन ले ही रहे हैं तो फिर अप्रोक्सीमेशन क्यों करेंगे, इजंट इट? Right, बट sir. एक दो बार गेट के एग्जाम में पता नहीं क्यों ऐसा क्वेश्चन दिए हैं, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. बट ओके चलो, मीन्स आपको एक मैट्रिक्स दे दिया H0 के टर्म में, H1 और HP भी एक मैट्रिक्स दे दिया, आप किसी तरह से इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ले निकाल पा रहे हो, है ना? सो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के बाद अगर आप टेलर एक्सपेंशन करोगे, देन लैम्डा टू द पावर 4 का जो पावर का जो कोफिशिएंट होगा, दैट विल बी योर द करेक्शन अप टू लैम्डा टू द पावर 4. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो आप पहले कंप्लीट सॉल्यूशन निकालोगे और फिर टेलर एक्सपेंशन करोगे. आई डोंट नो व्हाई वी विल डू दिस थिंग, इजंट इट? ओके सर. है ना कि भाई मैं कंप्लीट सॉल्यूशन जब मुझे पता ही चल गया तो, बट ओके वी आर गिविंग एग्जामिनेशन, सो एग्जामिनर की भी बात माननी पड़ेगी हमें, ठीक है? तो वैसे केस में क्या रहेगा, आपको प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा, उस प्रॉब्लम को आप कंप्लीटली सॉल्व करोगे. ऑब्वियसली यू कैन सॉल्व द आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वेरी इजीली टू द कंप्लीट सॉल्यूशन है आल्सो, बट अगर हम बहुत इजीली सॉल्व भी कर पाए तो फिर अप्रोक्सीमेशन क्यों करें? देयर इज नॉट एनी आंसर फ्रॉम माय साइड, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है, so what you will do, you will just do complete solution and then take a power series and get the answer. ठीक है? मैं एक दो क्वेश्चन करूंगा ऐसा, Yes, sir. ठीक है? But this is not a logical one. So okay, so take a break of 5 to 7 minutes at least, है ना? Then we will straightforward go to some basic problem. So अब बताओ इस पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको क्या दिमाग में रखना है? How you are doing the integration of this? These all are integration, isn't it? ये सारा का सारा क्या है? इंटीग्रेशन Integration. है. अब इस इंटीग्रेशन को स्मार्टली कैसे करना है? This is real challenge for exam point of view. Okay, so in the second session we will just go for some problem. Okay, Yes, sir. चलो.